फिजा, हम लोग इस वक्त यूट्यूब पर लाइव हैं। तो अभी मैंने आपको होस्ट बना दिया है और रिकॉर्डिंग भी आपने करनी है और सारा कुछ अब आपके हैंडेड ओवर टू यू। फेसबुक पे मुझे इशू आ रहा था तो कनेक्ट नहीं हो सका फेसबुक। मैं तकरीबन 1 घंटे से फेसबुक कनेक्ट करने की कोशिश कर रही। तो ये मीटिंग जब तक आप खुद एंड नहीं करेंगी तब तक ये मीटिंग एंड नहीं होगी। हम लोग इस वक्त यूट्यूब पर लाइव है। Okay, ma'am. And I have to record this on this computer, or what else I need to do?
Hello, Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, ma'am? I'm doing well. How are you, Abhi? Alhamdulillah, fine. Okay, so today we are going to do is we are going to begin with the listening. Okay, so any queries you have for listening, so you can discuss with me right now. No, at the moment I have no question. Okay, and you're confident enough that you can easily do it. Yes, inshallah. You had practiced before. Yes, inshallah. Okay, so what we will do, I will share you. I will play the audio and I will also share my screen with you in case you don't have the book, but I feel you have it. So, Yes, I have the book with me. okay. So with every section, I will guide you that how we will do the listening, like with the question number 1 to 10. आपको किस तरह से कौन सा कीवर्ड ध्यान रखना है और आपको क्या कहते हैं किस वक्त रेडी रहना है कि आपका आंसर करीब में है ठीक है बिकॉज इसी तरह होता है कि हम अपना आंसर मिस कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट रेडी और कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा ड्रैग्ड हो जाते हैं सुनते वक्त जो कि नहीं होना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम आंसर्स जो है ना कॉन्फिडेंटली ग्रैब कर लें और अपना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट लिखें ठीक है ना तो टुडे वी आर गोइंग टू डू समर म्यूजिक फेस्टिवल बुकिंग फॉर्म जो कि हमारे पास कैम्ब्रिज बुक 8 का पहला टेस्ट है राइट सो आई एम गोइंग टू प्ले दैट विद यू and we are going to do it now. Are you ready? Your test is with you. Yes, I'm ready. Okay, so पहला क्वेश्चन जो है हमें एक हमें दिया हुआ है उन्होंने सैंपल क्वेश्चन है ठीक है सैंपल एग्जांपल है जिसका आंसर ब्रोशर है तो वी विल लिसन दैट उसके बाद आपके जो है एमसीक्यूज शुरू हो जाएंगे जो पहला फर्स्ट सेक्शन का एमसीक्यूज होते हैं वो इतने लेंथी नहीं होते दे आर इजी टू अंडरस्टैंड तो की क्या है जितना आपका शुरू का टाइम देते हैं ना वो आपको जो पहला पॉज देते हैं उसमें आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस रीड कर लेना है यानी 1 से लेकर 10 तक या उससे आगे भी अगर आप रीड कर सकते हैं तो आप एक एक दफा रीड कर लें उससे ये क्या होगा कि आप टेक्स्ट से फेमिलियराइज हो जाएंगे लिसनिंग में सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है कि लिसनिंग में आपको साइमल्टेनियसली रीडिंग भी करनी है लिसनिंग भी करना है एंड राइटिंग भी करनी है 3 एक्शन करने यू हैव टू बी अ मल्टीटास्कर इन ऑर्डर टू गेन योर डिजायर बैंड तो आपको रीडिंग पहले कर लेनी है जितना शुरू का पॉज होता है उसको इस्तेमाल करें जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप रीड कर सकती हैं आपने वो पहले पॉज में ही रीड कर लेने हैं उससे ये फायदा होगा जब आपको इवेंचुअली उस क्वेश्चन के लिए क्योंकि जैसे जैसे लिसनिंग बढ़ती है ऑडियो ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा पॉजेस छोटे होते जाते हैं राइट तो जितना आप पहले रीड कर लेंगे उससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ओके दिस इज द टेक्स्ट और आप ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे ऑलरेडी फेमिलियराइज्ड होंगे क्या कहते हैं अपने टेक्स्ट से तो ऑडियो प्ले होगी तो आपकी टास्क थोड़े से लाइट हो जाएंगे क्योंकि आपको ऑलरेडी टास्क का टेक्स्ट का पता होगा सो आई एम गोइंग टू प्ले नाउ बी रेडी 1 2 3 काइंडली म्यूट Okay. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be... You can hear clearly, Abir? Yes, I can hear it clearly. Okay. Time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet.
Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a conversation between two friends called George and Nina about a summer music festival. First, you have some time to look at questions 1 and 2. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 and 2. Hi, George. Glad you're back. Loads of people have phoned you. Really? I felt just like your secretary. Sorry. I went into the library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting. What? A book? No, a brochure from a summer festival, mainly Spanish music. Look, I've got it here. Spanish music? I really love the guitar. Let's have a look. So what's this group, Guittarini? They're really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library, so I heard them. They play fantastic instruments, drums and flutes and old kinds of guitars. I've never heard anything like it before. Sounds great. Okay, shall we go then? Spoil ourselves? Yes, let's. The only problem is there aren't any cheap seats. It's all one price. Well, in that case, we could sit right at the front. We'd have a really good view. Yeah, though I think that if you sit at the back, you can actually hear the whole thing better. Yes. Anyway, we can decide when we get there. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 3 to 10. Yes, Abir, any query? No. Now listen Okay, now and answer continue. questions 3 to 10. So will you fill in the form or shall I? I'll do it. Name, George O'Neill. Address, 48 North Avenue, West Sea. Do you remember our new postcode? Still can't remember it. Just a minute. I've got it written down here. WS6 2YH. Do you need the phone too? Please, I'm really bad at numbers. 01674 553 242. So let's book 2 tickets for Guittarini. Okay. If you're sure $7.50 each is all right. How do you feel about the singer? I haven't quite decided, but I've noticed something on the booking form that might just persuade me. What's that then? Free refreshments. Really? Yes, look here. Sunday, 17th of June. Singer. Ticket, £6, includes drinks in the garden. Sounds like a bargain to me. Yes. Let's book 2 tickets for that. So, what else? I'm feeling quite keen now. How about the pianist on the 22nd of June? Anna Ventura? I've just remembered that's my evening class night. That's okay. I'll just have to go on my own. But we can go to the Spanish dance and guitar concert together, can't we? Yes, I'm sure Tom and Kieran would enjoy that too. Good heavens, £10.50 a ticket. I can see we're going to have to go without food for the rest of the week. We'll need to book 4. Wish we were students. Look, children, students, and senior citizens get a 50% discount on everything. If only. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Okay.
Sabir, I feel you have already gathered your answers. Yes. So let's discuss them, that how many correct you have gathered, because I really want to know that you're progressing in the right way or not. So first one is, in the lobby of the library, George saw. What actually George saw? We have three options here. Is a group playing music, a display of instruments, a video about the festival. अच्छा जी, अब आपका कीवर्ड है कि लॉबी में, जहां लॉबी की बात आएगी, एंड देन द लाइब्रेरी जॉर्ज सॉ, लाइब्रेरी की लॉबी में जॉर्ज ने क्या देखा, ठीक है ना। अ ग्रुप प्लेइंग म्यूजिक, उसने एक ग्रुप देखा जो म्यूजिक प्ले कर रहा था। अ डिस्प्ले ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देखा, या अ वीडियो अबाउट द फेस्टिवल। अब इसने बात सारी की होगी, इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात होगी, बट यू हैव टू गैदर द मीनिंग कि एक्चुअली उसने क्या देखा। सो आपने क्या सिलेक्ट किया, आंसर क्या है आपका? Video about the festival. Actually, accurate, correct. Well done. Next is, George wants to sit at the back so they can see wall, hear clearly, pay less. For what reason he chose to sit at the back? Well, he said clear better, so it's clear here. Here clearly. Hear clearly. It's B. Accurate answer. Okay, next हमारे पास क्वेश्चन था कि उसका एड्रेस क्या था? 48 North Venue. Yes. West. वेट सीट, तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो आपका आंसर सिर्फ होगा 48 नॉर्थ एवेन्यू, बिकॉज हियर वी हैव टू गो विद द कमांड नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर, यानी एक नंबर हो सकता है और 2 वर्ड्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा का आंसर नहीं हो सकता। और आपने देखना है, अगर वेट सी आगे लिखा हुआ है तो आपको उसको शामिल नहीं करना, ओके, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्ट कोड था। पोस्ट कोड क्या लिखा है आपने? SS 62Y8. डबल एस 62Y8. नहीं, आपका आंसर गलत हो गया। देखें, ये चीजें जो है ना बहुत क्लियरली क्या कहते हैं, क्योंकि सुननी पड़ती हैं, वरना इनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना उस पे गौर करना होता है। WS62YH, ये है इसका आंसर। WS6 S6 2YH. 2YH. Okay. Yes. Okay. Okay. So next we have a telephone number. क्या लिखा आपने telephone number? 01674553242. Right, accurate. आपका एक गलत हुआ अभी इसमें, 5 में से अभी तक एक रॉन्ग है। So next था हमारा कि क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन जो नीचे आया था टेबल में, 6 जो था 17 जून हमारा कीवर्ड था, और सिंगर के साथ क्या इंक्लूडेड था? आपका आंसर क्या है? Drinks. ड्रिंक्स, राइट। ड्रिंक्स भी ठीक होगा, रिफ्रेशमेंट भी ठीक होगा, तो ये ठीक है, बिकॉज दे क्लियरली सेड ड्रिंक्स इन द गार्डन। उसके बाद 22 जून आपका कीवर्ड था, उसके आगे क्या 7th का आंसर क्या लिखा आपने? Well, I couldn't understand that word. Well, peers something. No, it's pianist, means the one who play piano. Oh, Okay, okay. so 2 wrong we have now. And then 23rd June आपका कीवर्ड था स्पेनिश डांस एंड गिटार कॉन्सर्ट, उसका प्राइस ऑफ टिकट क्या है? 8 पे क्या लिखा आपने? 10.50. ओके, राइट, एक्यूरेट। एंड नंबर ऑफ टिकट 4. यस, करेक्ट। एंड लास्टली एट 10th पे आपने क्या लिखा? हाउ मच डिस्काउंट दे विल गेट? 50%. Yes, 50%. Okay, here I want to welcome everyone who have just joined our live session today. I hope you all understand that we are doing today live session for you guys to understand a little bit regarding
listening, and we will try to share the tips and tricks with you so you can start practicing yourself. And in case you really want to join us, you can contact Evision Academy. Okay, so Abir, we will move forward. Next हमारे पास है सेक्शन 2. अच्छा अबीर, आपने ये देख लिया कि आपके पास मैक्सिमम टाइम होता है, क्योंकि एक पॉज वो आपको पहले देते हैं क्वेश्चन शुरू होने से पहले, उसके बाद एक पॉज जो होता है जब आपका सेशन खत्म होता है उसके बाद कहते हैं चेक योर आंसर्स। तो उसमें आपने आंसर्स नहीं चेक करने, आपने एक्चुअली फर्दर क्वेश्चंस रीड आउट कर लेने मैक्सिमम, यानी सेक्शन 2 के भी सेक्शन 3 के भी जितना आपके पास टाइम होता है उसको अपडेट करना है उन सबको रीड आउट करने के लिए। एंड यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अंडरलाइन करने से क्या होगा कि आपका फोकस रहेगा कि जो क्लोजेस्ट ऑप्शन जब आ जाएगा लिसनिंग में, मुझे उस पर फोकस रखना है और उसके बाद मेरा आंसर आएगा। सो इन दिस केस आप अटेंटिव भी रहेंगे, और क्योंकि आप वेट कर रहे होंगे उस स्पेसिफिक वर्ड के लिए। अच्छा, जो वर्ड लिखा हुआ है उस या तो पैराफ्रेजिंग आएगी या उसकी रीवर्डिंग हुई भी होगी। सो यू हैव टू keep the synonyms in the mind, and you can actually expect these words कि इस तरह की बात हो सकती है। अब सबसे पहले टाइटल रीड कर लेना है सेक्शन 2 का, और कमांड आपने समझ लेनी है कि टाइटल है द डायनासोर म्यूजियम, यानी डायनासोर म्यूजियम से रिलेटेड कोई बात है। उसके बाद जो कन्वर्सेशन होगी उसमें आपने सिर्फ जो अपना आंसर पिक करना है वो तो या तो 2 वर्ड्स का होगा और या एक नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर करने हैं ताकि आप आंसर जो है करेक्ट ही गैदर करें। नीचे सब आपको पहले फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं 11 से 15 तक। फिर नीचे जो है आपके पास चूज 3 थिंग्स आपने चूज करनी है। वो इसमें बहुत अटेंटिवली सुनना है। आपको पता होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए which 3 things can student have with them in the museum। ठीक है, अगर क्वेश्चन पता होगा तो आपको इजीली आप आंसर गैदर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आपको गैप मिले तो उसमें आपने क्या कहते हैं फौरन से अपने क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी एक एक दफा रीड आउट कर लेना जो जो आपके ऑप्शंस हो। नेक्स्ट है which 2 activities can student do after the tour at present। ठीक है ना, 2 एक्टिविटीज कौन सी हैं जो अभी प्रेजेंट में मौजूद है, जो यानी उसमें यानी ऐसी बात हो सकती है कि वो कहें कि अभी ये चीज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है या कुछ चीज रीबिल्ड हो रही है, तो अभी प्रेजेंट में ये चीजें होने वाली हैं, यानी ये सारी एक्टिविटीज स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो कि इस वक्त म्यूजियम में आएंगे, ठीक है। Okay. So let's begin with the session and be ready. Okay, I'm going to play it again. Section 2. You will hear the education officer of a dinosaur museum giving information to some teachers who are planning a school visit. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Hello, and thank you for asking me to your teachers' meeting to talk about the Dinosaur Museum and to tell you a bit about what you can do with your students there. Well, let me give you some of the basic information first. In regard to opening hours, we're open every day of the week from 9 a.m. to 8 p.m, except on Mondays, when we close at 1:30 p.m. And in fact, the only day in the year when we're closed is on the 25th of December. You can book a guided tour for your school group any time that we're open. If you bring a school group to the museum,
When you arrive, we ask you to remain with your group in the car park. One or more of the tour guides will welcome you there and brief you about what the tour will be about. We do this there because our entrance is quite small and we really haven't got much room for briefing groups in the exhibition area. As far as the amount of time you'll need goes, if you bring a school group, you should plan on allowing a minimum of 90 minutes for the visit. This allows 15 minutes to get on and off the coach, 45 minutes for the guided tour, and 30 minutes for after-tour activities. If you're going to have lunch at the museum, you will of course have to allow more time. There are 2 cafes in the museum with seating for 80 people. If you want to eat there, you'll need to reserve some seating, as they can get quite crowded at lunchtime. Then outside the museum at the back, there are tables, and students can bring their own lunch and eat it there in the open air. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. When the students come into the museum foyer, we ask them to check in their backpacks with their books, lunchboxes, etc. at the cloakroom before they enter the museum proper. I'm afraid in the past we have had a few things gone missing after school visits, so this is a strict rule. Also, some of the exhibits are fragile, and we don't want them to be accidentally knocked. But we do provide school students with handouts with questions and quizzes on them. There's so much that students can learn in the museum, and it's fun for them to have something to do. Of course, they'll need to bring something to write with for these. We do allow students to take photographs. For students who are doing projects, it's useful to make some kind of visual record of what they see that they can add to their reports. And finally, they should not bring anything to eat into the museum or drinks of any kind. There are also a few things that students can do after the tour. In the theaterette on the ground floor, there are continuous screenings of short documentaries about dinosaurs which they can see at any time. We used to have an activity room with more interactive things like making models of dinosaurs and drawing and painting pictures, even hunting for dinosaur eggs. But unfortunately, the room was damaged in a bad storm recently when water came in the roof, so that's closed at the moment. But we do have an IT centre where students have access to CD-ROMs with a range of dinosaur games. These games are a lot of fun, but they also teach the students about the lives of dinosaurs, how they found food, protected their habitat, survived threats, that kind of thing. And I think that's all I have to tell you. Please feel free to ask any questions if you would like to know anything else. Okay, Beat, so you got it? Yes. So I really want to check your answers right away. So actually we can discuss it simultaneously. Otherwise कोई भी चीज अगर रह जाती, जैसे अभी आपका जैसे सेक्शन 1 ही था ये, तो इसमें 2 मिस्टेक्स आई हैं, तो कोशिश करनी है हमने कि लिसनिंग में सेक्शन 1 में सेक्शन 2 में कोई भी मिस्टेक ना हो. इवन आपका जो नेक्स्ट सेक्शन 4 से पहले आपने जितनी मिस्टेक्स रिड्यूस कर सकते हैं हमने उतनी करनी है, बिकॉज इफ यू एक्चुअली टारगेटिंग फॉर 6 यू एक्चुअली गेट 7 एट होम. 7 बैंड्स आपके घर पे आने चाहिए. सो क्योंकि अगर एग्जाम प्रेशर में कोई भी डिफिकल्टी होती है, इन केस
आप प्रेशर डील नहीं करते, बट उसमें भी आपको इतना प्रो होना चाहिए कि आपने टारगेट ज्यादा का किया हुआ हो, अगर कोई चीज स्लिप हो भी जाए तो आप बहुत ज्यादा नीचे ना हो। इसलिए इफ यू आर टारगेटिंग फॉर 8, तो घर पे कम से कम 9 या आपके कंप्लीट 8.5 आने चाहिए। उससे पहले मैं कहती हूँ कभी भी अपना टेस्ट रजिस्टर ना करवाएं, बिकॉज यू विल फेस anxiety and depression afterwards, because actually that happens. तो हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कितने इसमें करेक्ट हुए हैं। आई होप सो कि आपको इजीली मिल गया हो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हुई हो। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास द डायनासोर म्यूजियम का। द म्यूजियम क्लोजेज एट dash PM on Monday, specifically Monday 1:30. को 1:30 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द म्यूजियम इज नॉट ओपन ऑन, सिर्फ एक दिन है जब वो क्लोज होते हैं, वो कौन सा दिन था? Well, I missed that one. Oh, that was so clear. Be vigilant. Okay, be vigilant. School groups are met by tour guides in the dash. In the In the car park. yes, correct. अच्छा 12 का आंसर है 25th December. Okay. She clearly mentioned that. हम अच्छा अब क्या कहते हैं, if you want to practice with me, तो हम ऐसा करेंगे कि जो चीजें जो मिस्टेक्स हमारी आएंगी हम उसको दोबारा से सुनेंगे, ठीक है? जब तक कि आप उसको एक्यूरेटली सुन नहीं लेती एंड आप करेक्ट आंसर आप ग्रिप नहीं कर लेती, मतलब दिस इज द ओनली प्रॉब्लम कि आपने अटेंटिवली उसको सुना नहीं, बट इसमें कोई भी वोकैबुलरी की चीज नहीं थी, कोई भी ग्रामर की चीज नहीं थी, कोई भी स्पेलिंग की इश्यूज नहीं थे आपके, ठीक है ना? इसमें ये था कि आपने अटेंटिवली सुना नहीं और वो आपसे मिस हुआ। तो उसके लिए सिर्फ ये होता है कि लिसन अगेन एंड अगेन टू योर मिस्टेक्स टिल यू ग्रैब इट इजीली, ठीक है ना? Okay. अब नेक्स्ट है 14. The whole visit takes 90 minutes, including dash minutes for the guided tour. 45. Correct. Okay. So, okay. So next we have, हाँ जी. There are dash behind the museum where students can have lunch. What they had? Tables. Tables. Yes, accurate. Next we have, which three things can students have with them in the museum? Food, water, cameras, books, bags, pens, worksheet. What they can have with them? Cameras, books, and worksheets. Accurate. Okay. Next we have, which two activities? One, which two activities can a student do after the tour at present? क्या चूज किया इसमें से? Build model dinosaurs, watch films, draw dinosaurs, find dinosaur eggs, or play computer games? Watch films and play computer games. Yes, all correct. So here we have only one wrong, right? Yes. Good score. Okay, so you're ready for section 3? Yes. अच्छा, सेक्शन 3 में आपको एमसीक्यूज आते हैं, ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है लिसनिंग में, ठीक है? Okay. इसमें क्या करना होता है, अभी तो जैसे हमने ज्यादा पॉज लिया हुआ है, ऑब्वियसली वी पॉज्ड आवरसेल्फ, लेकिन जब आपको गिवन पॉज मिलता है, जो मैं कंटिन्यूअसली एम्फसाइज कर रही थी कि आपने आगे के क्वेश्चंस रीड आउट कर लेने हैं, तो उसके लिए यही है कि आपके पास जो भी टाइम है ना, आपने कोशिश करनी है कि सेक्शन 3 में अगर एमसीक्यूज या मैप या डायग्राम कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, उसको आपने फौरन से रीड आउट कर लेना है, क्योंकि जितना पहले रीड आउट कर लेंगे ना, उतनी ज्यादा हमें याद रहेंगी चीजें। Okay.
So you have a time. आप ये क्या कहते हैं 21 से 24 read out कर लें. I'm going to play again. Okay? Okay, ma'am. So ready for section 3? Yes, I'm ready. Section 3. You will hear a student called Sandra talking to her tutor about a draft proposal she has written for a competition. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Right, Sandra. You wanted to see me to get some feedback on your group's proposal, the one you're submitting for the Geography Society field trip competition. I've had a look through your proposal, and I think it's a really good choice. In fact, I only have a few things to say about it, but even in an outline document like this, you really have to be careful to avoid typos and problems with layout in the proposal, and even in the contents page. So read it through carefully before submitting it, okay? Will do. And I've made a few notes on the proposal about things which could have been better sequenced. Okay. As for the writing itself, I've annotated the proposal as and where I thought it could be improved. Generally speaking, I feel you've often used complex structures and long sentences for the sake of it, and as a consequence, although your paragraphing and inclusion of subheadings help, it's quite hard to follow your train of thought at times. Oh, So cut them down a bit, can you? really? Yes, and don't forget simple formatting like numbering. Didn't I use page numbers? I didn't mean that. Look, you've remembered to include headers and footers, which is good, but listing ideas clearly is important. Number them or use bullet points, which is even clearer. Then you'll focus the reader on your main points. I thought your suggestion to go to the Navajo Tribal Park was a very good idea. No, I've always wanted to go there. My father was a great fan